Hello students. So as we started discussion on circular motion in our last class, mainly we discussed about three parameters like what is the direction of displacement. Then we also discussed about axis of rotation and about radius vector. So in continuation with this, today first we will discuss about angular displacement. So it is a very simple concept. Still we need to discuss, we need to say 2-3 words. So first of all we will see what is angular displacement. तो ये इसके बारे में हम सबको पता है ही, बहुत ही सिंपल है कि ऐसे कि मान लो there is a substance which is in motion along a circular path. Suppose this is the object which is moving in anti-clockwise direction. Okay, so we say that angular displacement is nothing but the distance traveled by this object in a particular time interval. Distance, you see, मान लो कि object, this is the center of rotation. At present, when a time t equals to 0, the position of this object is here. This is the position of the radius vector. Okay, so after time t, after certain time t, let here t is time equals to t. After certain time t, the object reaches at this point B. Okay, if this is our initial point A and this is final point B. So in this time interval, you see there are two types of displacements basically. तो एक है ये along the circumference of this circular path. इस लाइन से भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे तरीके से. यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज इन टू सेंस वी कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इन दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल व्हाट इज द एंगल डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट? दिस इज थीटा. एंगल कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज थीटा. सो हियर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो इफ यू डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, it is the angle. It's not distance but the angle. It is the angle described by the radius vector at the center of the circular path in a particular time interval. ओके, तो किसी एक टाइम पे, मतलब किसी एक टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके, एंड if we establish its relation with radius of this circular path, if small r be the radius of the circular path, then we know this angle theta equals to what? Arc by radius. Okay, now instead of our arc, that is this AB length, if this AB length is denoted by S and here this is radius vector and also radius of this circular path. When we say it is radius vector, then it is obviously it is a vector quantity, but if you say that it is radius, simply it will give you magnitude of this distance. So here r is the radius we are talking about. Here r radius, S is the arc length and this is angular displacement. Okay, so here this arc is denoted by S, radius by r. Okay, so here the formula or the relation between among these three is theta equals to S by r. Okay, तो ये एक relation मिल गया यहाँ पे. तो already we said that theta is used to denote angular displacement. Now what about unit of this angular displacement? तो unit of angular displacement
is रेडियन, ओके। एंड अगर मैं पूछूं कि नेम ए क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि हियर दिस थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट लाइक रेडियन बट इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, ओके। तो ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंड नाउ सिंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट व्हेन टाइम interval is very small, angular displacement is also considered as a vector quantity, okay. Now if it is a vector quantity, it must have some direction. Now what will be the direction of this angular displacement? जैसे कि नाम में ही है इसका angular displacement, और in general in case if we consider about linear motions also, then distance and displacement are two terms where distance is the scalar one and displacement is a vector quantity. In the name we see that already found that this is angular displacement, that means it is a vector quantity and it must have some direction. What about the direction of this angular displacement? तो ये एक्चुअली इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है। वन इज राइट हैंड स्क्रू एंड द अदर वन इज राइट हैंड थंब रूल। तो स्क्रू रूल का मतलब ये है, जैसे कि मान लो ये जो सर्कुलर पाथ, इसका सेंटर में एक तुम ऐसे स्क्रू रख दो। Now you have to rotate the screw along the direction of the object in motion. मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्क्रू रख दिया, ठीक है, दिस इज राइट हैंडेड स्क्रू। अभी दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलराइट। दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग इस स्क्रू को घुमाएंगे, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन व्हिच डायरेक्शन दिस स्क्रू विल एडवांस? The direction in which the screw advances gives the direction of the angular displacement. जैसे कि this is the circular tract, और इस ट्रैक में हम लोगों ने इस स्क्रू को परपेंडिकुलरली हेल्ड किया है। अभी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोगों को इस स्क्रू को घुमाना है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम लोग अगर इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्क्रू किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये बाहर की डायरेक्शन में आ जाएगा। सो विल से दैट हियर द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड। नाउ इफ वी कंसीडर दैट just like this, in this circular path this object is moving along clockwise direction, okay, not along, in clockwise direction। और ऐसा सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे और यू हैव टू रोटेट द स्क्रू along the direction of motion, that means clockwise direction। if you rotate the screw in clockwise direction, then what will be the direction in which this screw will proceed? This will go inward। so we can say that in this case, if the object is in motion in clockwise direction, the direction of this angular displacement will be downward or behind this board। obviously it will be perpendicular to this plane but it is behind this board, okay। तो इसके लिए डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो रोल है, वन इज राइट हैंड स्क्रू एंड द अदर वन इज राइट हैंड थंब। राइट हैंड थंब मतलब क्या है? जैसे कि देखो ये मेरा राइट हैंड, द कर्ल्ड फिंगर्स, इफ द कर्ल्ड फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, then the thumb will give the direction of angular displacement। जैसे कि मान लो यहाँ पे the object is in motion in anti-clockwise direction, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स क्या कर रहा है? ये मोशन को डिनोट कर रहा है। तो थंब क्या दे देगा इसका डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट आउटवर्ड। Here you see the object is in motion in clockwise direction। तो clockwise direction को अगर कर्ल को clockwise direction में रखना है तो thumb inward direction को indicate कर रहा है। That means the direction of angular displacement is inside the board and perpendicular to this plane of circular motion, okay। तो ऐसे तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, बस ये पता कर लेना चाहिए, ठीक है, पता करके रखना चाहिए। जैसे कि ऐसा हो जाएगा कि इफ एन
object is in motion along in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, then direction of angular displacement will be perpendicular to the plane of motion and anti-clockwise जब होगा this will be outward and outwards. Okay, so this is all about angular displacement. Now we will establish relation between angular displacement and linear displacement. Okay, so let's first erase it. Relation between angular displacement and linear displacement. Okay, linear displacement. So let's do the diagram first. There is the circular track. Along this circular path, there is an object in motion in anti-clockwise direction. Okay, this is the center of the circular path. At any instant, let this is O, this is A. This OA represents initial position of this object at any instant. Okay. Now after time t, instead of t, let's say it is a very small time interval. In this small time interval, the object get displaced to this position B after time del t. Okay, so since here the time interval is very small, in time dt the object gets displaced from A to B. So if when this time interval is very small, the angular displacement, let this angular displacement is also very small, that is d theta. Okay, and initial position of this object, here it is r. Okay, so let's write down. Let us consider an object initially at point A at any instant. Okay, so this OA is equals to R. Okay, after a very small time interval, dt, let the object reaches point B after describing an angular displacement d theta. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे दिस इज ए बी आर्क लेंथ इन टू सेंस. ओके, दिस इज ए बी, here arc length equals to linear displacement, and this is not like that. This is arc length and this is equals to AB arc. But if here that you see the time interval considered is very small, so जैसे कि मान लो जैसे कि ऐसे एक सर्कुलर पाथ है,
तो जितना बड़ा मान लो मैं ये पूरा इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट इफ यू कंसीडर ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस सच काइंड ऑफ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देन शायद हम लोगों को ऐसा लग भी सकता है कि यस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जितना छोटा करोगे इसका कार्वनेस जो है, कार्व जितना है वो इतना कम दिखाई देगा। तो यहाँ पे इतना है, मैं बोलूँगा नहीं इसको और भी छोटा करना है, तो अल्टीमेटली एक्स स्टेज ऐसा आ जाएगा जैसे कि मान लो हार्ट इटसेल्फ इज एन ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट, पर हम लोगों को तो ऐसा फील नहीं हो रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है और हम लोगों का विजन एक छोटा सा पर्सन को भी कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोगों को धरती को भी प्लेन जैसा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे इसको भी हम लोग एक प्लेन की तरह, एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा इसका स्ट्रेट लाइन। तो और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हम लोग इसको एक जैसे कि दिस लाइन कंटिन्यूड लाइक दिस ओ ए वेक्टर, देन इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे ए बी वेक्टर मिल रहा है। तो ये एक्चुअली क्या था, दिस इज एन आर्क, पर सिंस द टाइम इंटरवल इज very small, since the time interval is very small, इससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। और दिस ए बी इज डिनोटेड बाय डी आर वेक्टर। ओके, पहले हम लोग ये सब का मैग्नीट्यूड्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दिस इज थीटा, डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, और यहाँ पे आर्क इनटू सेंस क्या है, दिस इज ए बी आर्क एंड दिस इज आर। तो डी थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो इसको ए बी आर्क को हम लोग ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और डी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखा है डी आर एंड दिस इज आर, तो हम लोगों को मिल क्या रहा है, हियर वी गेट डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो ये है, दिस इज रिलेशन अमॉन्ग लीनियर डिस्प्लेसमेंट, देन रेडियस, देन this angular displacement. Okay, but you see this is a vector quantity, this is radius vector, this is also vector quantity, and this d theta is also a vector quantity. But if you observe that in here the left hand side is a vector quantity, so the right hand side must also be a vector quantity. So अगर right side में vector quantity है तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि in case of vectors we see that across b not equals to b cross a, और जैसे को होता है a क्रॉस b करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में आउटपुट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, और a डॉट b डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर होना चाहिए, और वेक्टर होने के लिए किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर मिलता है, तो ऑब्वियसली इन दिस राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी ए वेक्टर प्रोडक्ट। दैट मीन्स देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज, आइदर डी आर वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस डी थीटा होगा, नहीं तो डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर होगा, क्योंकि दिस अक्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी इन बी क्रॉस ए इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में अक्रॉस बी का मतलब जो है बी क्रॉस ए जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर। सो यहाँ पे जो होगा वो देखना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, क्योंकि आर क्रॉस डी थीटा एंड डी थीटा क्रॉस आर नॉट सेम थिंग। तो हम लोग इसे देख लेते हैं कि मतलब इसका ट्रू डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो ये और भी आसान हो जाएगा हम लोग अगर डायरेक्शन इसका डायग्राम को कुछ दूसरा तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जस्ट ए मिनट, हम लोग डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करते हैं। Let this is the circular path along which the object is in motion. Okay, this is radius vector, this is initial position of this object A and this is final position B. तो यहाँ पे देखो
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर? दिस इज रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में ए टू बी, तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डी आर वेक्टर, राइट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जैसे कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट मींस वी हैव टू रोटेट दिस स्क्रू लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम लोग इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो द स्क्रू विल डिस्प्लेस वर्टिकली अपवर्ड, दैट मींस this will give you the direction of angular displacement upward। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को, जैसे कि these are two parallel vectors, यहाँ पे भी हम लोग d थीटा का डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को तीन वेक्टर मिल रहा है, दिस इज द रेडियस वेक्टर, दिस इज डी आर वेक्टर एंड दिस इज डी थीटा वेक्टर। अभी हम लोगों को देखना है कि डी थीटा क्रॉस आर और आर क्रॉस डी थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो डी थीटा क्रॉस आर को हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं, डी थीटा क्रॉस आर। तो यहाँ पे डी थीटा क्रॉस आर, डी थीटा से क्रॉस करके हम लोग ऐसे आएंगे, स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाएंगे डी थीटा टू आर, पहले डी थीटा फिर आर आ रहा है, तो डी थीटा टू आर ऐसे घुमाएंगे तो ऑब्वियसली द स्क्रू विल मूव टुवर्ड्स डी आर वेक्टर। मतलब ऐसा लग रहा है कि डी थीटा क्रॉस आर करेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? टुवर्ड्स डी आर डायरेक्शन। तो लगता है शायद ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरों को भी एनालाइज करके देख लेते हैं। हियर दिस इज आर क्रॉस डी थीटा, ठीक है, आर से डी थीटा को क्रॉस करना है। दैट मीन्स जैसे कि तुम लोगों ने शायद वेक्टर में पढ़ाई किया होगा कि अगर इफ देयर आर टू वेक्टर्स लाइक दिस इज ए थ्री डायमेंशनल सिस्टम, तो अगर हम दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूव कर रहा है। तो यहाँ पे थ्री डायमेंशनल सिस्टम में यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रू पकड़ लिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सी, परपेंडिकुलर होगा तो ए बी प्लेन के। तो जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रू के अंदर के डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स अलोंग दिस डायरेक्शन द स्क्रू विल प्रोसीड। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो बी क्रॉस ए, जैसे कि उल्टा घुमाना है तो स्क्रू उल्टा घुमाएंगे तो ये बाहर के डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट मीन्स दिस विल फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सी, तो सी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को जब आर क्रॉस डी थीटा मिल रहा है, आर टू डी थीटा जब हम लोग प्रोसीड करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे आर क्रॉस डी थीटा, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से ये डी आर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर निकल के आ जाएगा। बट दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर का डायरेक्शन इनवर्ड, दैट मीन्स आर क्रॉस डी थीटा इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड। बट इफ यू कंसीडर डी थीटा क्रॉस आर, तो डी थीटा से आर तक हम लोग स्क्रू घुमाएंगे तो दिस विल मूव टुवर्ड्स along this dr direction, so we can say that yes, this is d theta cross r, not r cross d theta। तो यहाँ से हम लोगों को फाइनल क्या मिल रहा है? so this is linear displacement dr vector and this is equals to d theta cross r, d theta cross r vector। so this is the final expression or vector form which relates linear displacement and vector angular displacement, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर डिस्प्ले वेलोसिटी को लेके बात करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।